अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं में बढ़ रहे कैंसर से निपटने के लिए माश हॉस्पिटल ने शुरू किया ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। भारत में हर 100 कैंसर के मरीजों में 51 महिलाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में हर साल 6,85,000 से अधिक महिलाओं की मौत स्तन कैंसर के कारण होती है। माश हॉस्पिटल कैंसर का इलाज करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है। इनमें दवाएं, कीमोथेरेपी, बेहतरीन सर्जरी और कैंसर से बचाव के लिए दवाएं शामिल हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्फोपोस्ट न्यूज। How important is women's health in India? आज के इस अवसर में मैंने सोचा था कि since media is there, you are all fond of statistics and numbers. Despite us celebrating International Women's Health Center, International Women's Day tomorrow, it will be on Facebook, it will be on YouTube, you'll have a lot of discounts. But there's a very scary statistics on women's health, especially when we are trying to deal with cancer. So, before we even celebrate such a beautiful day, I thought let's go through what actually cancer in India for women need. Cancer is the second leading cause of death globally, पूरे विश्व में. Breast cancer is the most common cancer among women globally, which contributes for 27% of all cancers among women. 5 lakh case per year is diagnosed all over the world, and 5% of it is contributed from India. 2019 और 21 की रिपोर्ट में 1.2% of women in India were screened for cervical cancer, 0.6% was screened for breast cancer, 0.7% was screened for oral cancer. इसके मुकाबले में अगर आप विश्व की बात करें, 70% स्क्रीनिंग था in US, UK, USA, and we are at 0.6%. That much number of percentage we are less. Now, in India, the incidence of breast cancer has risen significantly. 2012 और 2022 के बीच में there is almost a 50% rise in the incidence of diagnosis of breast cancer. In 2020, 11 lakh 8,000 cases, more than 25 and 1 lakh cases were diagnosed with women breast cancer. Breast cancer, generally, I think mostly सबको पता है, it's a genetic factor, BRCA1 and BRCA2 genes. But unfortunately, there are other factors as well. ये factor तो हम control नहीं कर पाते हैं, genetic factor, but what we can control. We have started copying the West. उनके processed foods, their fast foods, their diet. We are leading population now in obesity, smoking, and alcohol. These are contributing factors for breast cancer. As per the National Cancer Registry Program, cervical cancer has accounted for 6 to 29% of cancers among women in India. And Pakum Pare is a district in Arunachal Pradesh, which contributes to 27% of cervical cancer in Asia. The highest number of cervical cancers in Asia is found in India. And what are we doing about it? There is actually not a very formulated national program or a policy which is being formulated. Halanki, our Honorable Union Minister Nirmala Sitharaman ji in the budget had told that vaccination program is included in the budget for 9 to 14 years. But cervical cancer is actually not just preventive, it has to be screened, prevented and cured. So again, health is not unidimensional, it has to be multidimensional. You have to have all the tools and everything to prevent such cancers. Cancer अगर बहुत जल्दी पता चल जाता है, it's very easily curable. So the diagnosis, the prevention is very important when it comes to
catching the cancer panic. Cancer of the cervix is related to a human papilloma virus, generally by sexual encounter, and it can be prevented the if the girls are vaccinated priorly between 9 to 14 years of age. And this is the program which the government is trying to follow suit. Now, ironically, cervical cancer के लिए बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है. You just need a human eye, you need iodine, white vinegar, and this is called a Villa and Villa 1 test. So it's so easy, and patient को cure करने के लिए you don't need a big surgery. It's a cryo surgery done without any even sedation. So it's very preventive. And at MASH, this is our program which we want to follow to reach out to the community services to help prevent cervical cancer in India by giving information, by holding camps, talks, medical talks to educate people that cancer need not be always scared of. Cancer का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है it's a wealth depletion. लोग अपने घर बार बेच देते हैं, काफी चीजें गिरवी करते हैं just to cure your loved one. So at MASH we all decided that we will be the middle tertiary care in Delhi. We have already done a lot of cancer cases. We have done laparoscopic colon cancer removal. We have done laparoscopic kidney cancer removal, breast cancers. We have operated at probably 1/3 of the cost of a primary large tertiary center. So at MASH, this is our vision to eradicate the dream of WHO. WHO has proposed a dream of 2030 called 90-70-90. 90% of the population should be vaccinated by 2030. 70% of the population should be treated by 2030, and 90% of the population would be screened before 2030. And 90-70-90, I'm sorry, is the vision of MASH. We want to help people in cancer, and that is our vision. So thank you very much. And I would like to give the next command to our founder and CEO, Mrs. Mansi Bansal-Jujunwala. Good morning, good afternoon, and thank you all for joining us. It is an honor and a privilege to be here sitting in front of you. MASH was established 6 months ago with a very simple aim to combine the latest cutting-edge technologies with our ethical and transformational practices practiced here to bring in the excellence in departments like gynecology laparoscopy, laparoscopy general surgery, orthopedics, and preventive medicine. With our achievements in the respective departments over these past few months, I'm very glad to announce the launch of our cancer department on the occasion of International Women's Day. Thank you all for being here once again. As we all know, Sir has already said that cancer is rising and India currently ranks 3rd in the world on the global map. We understand that each patient is unique and therefore we personalize their treatment to cater to their specific needs. Our predictive and preventive measures and strategies aim to detect and actively involve the patients in their treatment journeys, empowering them to make informed decisions and become active participants in their care. We strive for accuracy and efficacy in every aspect of treatments, not just disease management, but also preventive medicine. At MASH, we pride ourselves on providing a home-style environment. जैसे कि आपने हमारी facility देखी होगी, it doesn't feel very intimidating like traditional medical facilities. It feels like home. It is a very warm atmosphere here, जहाँ पे customized और personalized care हर patient को दी जाती है. We leverage on smart technology. हमारे सारे medical records cloud पे है, ERP system है, हमारा मोबाइल ऐप लॉन्च हो रहा है जल्दी में, जिसमें पेशेंट और डॉक्टर की इंटरैक्शन उनके रोज के रोज कैंसर केयर के लिए एक बहुत आसान बनती जाएगी. We are committed also. Our main vision is to make this care affordable and accessible for people from all walks of life, जहाँ से भी आए, because everybody aspire to get this kind of a care, जहाँ पे उनका ध्यान एक one-on-one patient to doctor interaction हो, one-on-one caregiver to patient एक care provide हो रही हो.
also on cancer, our multi-dimensional approach, which is the medicine, the chemotherapy, advanced surgeries, and preventive medicines. Not many of you may know my journey for cancer is actually deeply influenced by my own mother. She was detected and battling this disease not once but twice, and also 6 to 7 more cases in our own family who are battling with cancer. I understand जिस हिसाब का मेंटल एक फाइनेंशियल एक फिजिकल टोल पड़ता है पेशेंट की फैमिली पे और उन पे खुद पे सो इट इज़ दिस पर्सनल एक्सपीरियंस दैट फ्यूल्ड माय डिटर्मिनेशन कि कैंसर डिपार्टमेंट एक बहुत ही मॉडर्न अपडेटेड कैंसर डिपार्टमेंट हम मैश में शुरू करें एंड वी वेलकम ऑल द पेशेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड अब्रॉड. And of course, together, if we continue to strive for excellence, redefine that cancer care, I'm sure we can fight this. Thank you. Session is open for Q&A. ये सबसे पहले कल महिला दिवस पे आप कर रहे हो एक महिला शेड्यूल में कुछ महिलाओं के लिए कुछ फैसिलिटी कुछ दे रही है जी सारी फैसिलिटीज हैं यहाँ पे महिलाओं के लिए. सारे महिलाओं के जितने भी गायनी के अंदर गायनी डिपार्टमेंट में जितने भी कैंसर आते हैं और उसके बाहर वो सारे अवेलेबल हैं. नहीं कल के लिए कोई खास अलग से प्रिविलेज है या जी वी हैव कैंप्स, फ्री चेकअप कैंप्स, फ्री स्क्रीनिंग कैंप्स होंगे यहाँ पे For cervical cancer and for breast cancer. तो सबसे ज्यादा खतरा सर्वाइकल से है या So cervical cancer जो है is the second leading cause of death. Breast cancer is the first. पहले क्रम में breast cancer आता है. सर आपने कस्टमाइज और क्योर की बात करी है. आज की भ्रांति यही है कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल कस्टमाइज सर्विस जो कहे हैं आम पेशेंट को शायद नहीं दे पाता. तो आप किस तरीके से उसको कस्टमाइज कर रहे हैं, क्या सुविधाएं हैं? क्योंकि पैनल में जब आते हैं तो पहले पेमेंट होती है, इंश्योरेंस होती है, पेमेंट पहले होती है, फास्ट पेमेंट नहीं होती है, फुल पेमेंट पहले होती है, फिर बाद में वो कवर होता रहता है. ये कस्टमाइज सर्विस किस तरीके से? मैश में ज़्यादातर जो हमारे पेशेंट्स हैं हमें अफोर्डेबल तरीके से ये जो हमने एक पैकेजेस बनाया जिसमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होगा, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और उसके आगे जो कीमोथेरेपी. अफोर्डेबल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माय जर्नी हैज बीन थ्रू मैक्स एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन मोशन हॉस्पिटल. सो बीइंग इन अ वेरी लार्ज फैसिलिटी मुझे पता है कि एज आई सेड मैं ड्यूरिंग दिस ब्रीफ ऑल्सो मैं बता रहा था कि कैंसर के लिए ना आदमी लुट जाता है बुरी तरह से. आपने तो 1/3 पेमेंट का भी बात की है. So we are practically tied up with a lot of companies and facilitators कि अगर पेशेंट के पास कुछ पैसों की दिक्कत हो तो जैसे आजकल मोबाइल की सुविधाएं होती है EMI facilities. So we have provided even patients with EMI facility where if there is any kind of let's say there is an interest rate or anything, the hospital is there. तो वो ईएमआई की फैसिलिटी तो अबाउट बैंक के थ्रू होती है. तो आप बैंक से जुड़े हुए हैं या इंश्योरेंस सेंटर से आप अपने आप से हम बैंक से जुड़े हुए हैं उससे. बैंक से जुड़े हुए हैं. वेरियस मल्टीपल बैंक्स एंड एनबीएफसी बैंक्स उनसे हम जुड़े हुए हैं. तो वो लोन पेशेंट को जाता है बट इंटरेस्ट इज ओन बाय अस बाय मैश. अगर किसी का ट्रीटमेंट होता है तो कितना खर्च अप्रॉक्सिमेटली आ जाता है? अगर जैसे कैंसर सर एक सब्जेक्टिव है बिकॉज कैंसर की स्टेजिंग पे डिपेंड करता है. बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट की मैं एक संख्या आपको बता दूं. बट हैविंग सेड सो ट्रीटमेंट कॉस्ट इन इंडिया फॉर कैंसर इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव बिटवीन 1 लाख to 10 लाख to 15 लाख. तो ये जो नीडल है हर जगह वेरी करता है. हर पेशेंट के लिए कस्टमाइज पैकेज इसीलिए है क्योंकि वो स्टेज क्या हुआ है कैंसर का, सर्जरी की आवश्यकता है कि नहीं, कीमोथेरेपी कितना उनको मदद करेगा, उस सब को रखते हुए उस सारी चीजों को नजर रखते हुए कस्टमाइज पैकेजेस बनाए जाते हैं ताकि पेशेंट के ऊपर भार. कल आप फ्री कैंप लगा रहे हैं तो उसके बाद अगर किसी को ऐसा निकेट होता है तो उनका ट्रीटमेंट वगैरह भी फ्री किया जाएगा या वो चार्जेबल होगा? वो से डिपेंड करता है. एज आई सेड अगेन हर वॉक ऑफ लाइफ के पेशेंट्स आएंगे. एज आवर फाउंडर्स एंड सीईओ हियर इन्होंने ऑलरेडी हमें ये बताया गया था कि अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसमें बिल्कुल भी क्षमता नहीं है ट्रीटमेंट करने की, so I think we had a talk. We are ready to take care of the patient without any cost also.
free of cost. Free of cost. Yes. तो ये अच्छा, ऐसा- जैसे कि आप लोग एक बहुत अच्छी पोजीशंस होल्ड कर चुके हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और आप लोगों ने बताया है कि अगर गर्ल्स को 9 से 14 इयर्स के बीच में वैक्सीनेट कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक इस चीज़ को रिड्यूस कर सकेंगे। तो क्या सर, बीइंग यू आर एसोसिएटेड विद द मेडिकल इंडस्ट्री, विद द मेडिकल दिस थिंग, तो आपने कभी गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसा अवेयरनेस या जैसे पोलियो ड्रॉप्स मैंडेटरी होती हैं वैसा कुछ प्रोग्राम जनरेट करने की कोशिश करी है सर? एंड सेकंड थिंग सर, सॉरी इंटरप्ट, क्या हमारा आयुष्मान कार्ड या वैसा कुछ यहाँ पे मिडिल क्लास पीपल के लिए अभी आपने शुरू किया है? आर यू एक्सेप्टिंग दैट कार्ड? So, since it's a two-part question, the first part of the question I'll answer. The second part of the question I will answer. गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और गवर्नमेंट कैंप्स के द्वारा अवेयरनेस हर हॉस्पिटल ने, हर हॉस्पिटल इन्वेस्टर्स ने, डॉक्टर्स ने बहुत पहले से हमने शुरू की। अनफॉर्चुनेटली कोई नेशनल पॉलिसी नहीं बनी, एक्सेप्ट फॉर सम स्टेट पॉलिसीज लाइक सिक्किम व्हिच इज रनिंग देयर ओन कैंसर पॉलिसी फॉर पेशेंट्स। एज मेडिकल पर्सनल्स वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमें एक टूल, एक माध्यम है जो सोशल मीडिया है, बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं जो हम कंडक्ट करते हैं। गवर्नमेंट से हमने बहुत बार वी हैड टॉक्स, आई थिंक इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1965 ऑनवर्ड्स, दैट कैंसर बीइंग वन ऑफ द फोरफ्रंट शुड हैव अ मोर कैपेसिटी इन द बजट फॉर द हेल्थ सिस्टम। पब्लिक सेक्टर में तो बहुत ज्यादा एज यू सेड देयर आर लॉट ऑफ रेड टेपिज्म्स और ब्यूरोक्रेसी, तो उसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट एज बीइंग अ प्राइवेट हेल्थ सेक्टर there have been numerous programs which we have done with programs like Shiksha and education, which for girls in school में जाके हमने national programs के through कभी we have done these camps to educate, and especially gynae जो हमारे doctors हैं, sexual health, sexual education and prevention के ऊपर ये programs काफी हद से बहुत पहले से चल ही रहे हैं। And the second part of the question, let Amishji answers. Answering to your second question, at MASH we are trying to have empanelment with all the insurance companies. Insurance companies के अलावा CGHS, DGHS, ESIC, ECHS और बहुत जल्दी आयुष्मान भी हम यहाँ पे लेंगे। हम किसी भी पेशेंट को मना नहीं करना चाहते। We want every patient to have medical treatment at MASH. जैसे मानसी ने बोला, MASH is accessible and affordable to all. ऐसे ही बताया कि जेनेटिक हमें कैसे बताते हैं कैंसर जो जेनेटिक होता है, जेनेटिक डिस्टेंस भी बहुत है, जेनेटिक तो बाकी कोई रिपोर्ट भी ऐसी नहीं है आपका जेनेटिक होता है। ऐसा है कि let's talk specifically for many cancers. So genetic is one of the major predisposition जो आपके genes में mutations होते हैं वो आपके generations में आगे भेज जाते हैं। जैसे आपका बाल का कलर है, hair, everything goes on. जो म्यूटेशन होता है हर जनरेशन में जरूरी नहीं है वो स्किप होता है, आगे भी हो सकता है। तो आजकल जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक स्टडीज ये सारे पेशेंट्स के लिए अफोर्डेबल भी हैं और एक्सेसिबल भी हैं। ब्रेस्ट कैंसर में जो जेनेटिक है वो है BRCA1 एंड BRCA2। जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है और बोलता है कि मेरे स्तन में एक लंप आया है, हम एग्जामिन करते हैं, हमें शुबा होती है कि ये ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जाते हैं। The next pertinent question होता है कि आपके फैमिली हिस्ट्री में आपके मदर या फादर में किस को ऐसी बीमारी थी। कोई बोलता है मेरी मौसी को था, मेरे को इसको था, मेरे इनको था, तो हम इनको जेनेटिक टेस्टिंग्स के लिए भी भेज देते हैं जिसमें ये